Welcome back, students, to Gyanmanjari Vidyapith online education. I hope that you all are fine and safe at your home. So, students, in today's video lecture, we are going to discuss the 7th unit of our main textbook, Flamingo. The name of this 7th unit is The Interview. Okay, students, so let's learn this unit step by step, one by one. Okay, so let's start from the introduction of the writer, the author who has written this unit. Okay, from the introduction to the Penguin Book of Interviews, edited by Christopher Silster. So first of all, we are going to know about the author, about the writer. Christopher Silster, 1959, was a student of history of Peterhouse, Cambridge. He was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day. So it is about a very brief introduction of the author of this writer. So he is also the student of history. So that's why, see, students, in this unit we are not going to discuss the interview that for job or various post. Here the lesson, this unit interview, describes some in different sense that interview. What is that we are going to discuss in डिटेल. यहाँ पे हम लोग जो इंटरव्यू की बात करने जा रहे हैं वो वाला इंटरव्यू नहीं है जो कि हम जॉब के लिए जब जाते हैं तब हमारा इंटरव्यू हम देते हैं और हमारा लिया जाता है. वो सारे इंटरव्यूज़ की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, पर एक इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है जो जर्नलिस्ट लेता है, वो टाइप का जो इंटरव्यू होता है उस तरह के इंटरव्यू की यहाँ पे बात की गई है. सो व्हाट इज़ अबाउट दैट वी आर गोइंग टू see in detail. So first of all, students, part 1 is here. So what is that in part 1? Let's see the first. Part 1 में हमें यहाँ पे क्या describe किया गया है वो हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं. Since its invention, students, you may carry your textbook also with you, but suppose you don't carry, then also it's okay. This is the same thing that you are having on the mobile screen. Okay. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Earlier it was quite different, but now interview actually has become very much common in journalism, in the field of journalism. Now it's very common. We can see even students not only in this field, but you may find so many places this portion of interview. Okay, whenever you may find on TV also, various social media also, so many websites also, you may find the thing like interview. So it's now very common, it's not new for anybody, so it's very common. Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point of their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. Actually, nowadays it is not new for us. Even a person who is literate, even a person who knows to read and write, a person who is able to read well, this person can read even interview ऑन द न्यूज़ पेपर्स ऑल्सो. ऐसे नहीं है कि अब इंटरव्यू हम सिर्फ न्यूज़ चैनल पे ही देख सकते हैं, ऐसे भी नहीं है अभी कि हम टीवी पे या किसी और सोशल मीडिया से या फिर हम सिर्फ वीडियो में ही उसे देख सकते हैं, ऐसे भी नहीं है. ऑन रिटर्न फॉर्म ऑल्सो इट इज़ पब्लिश्ड एंड दैट्स वाई जो लिटरेट पीपल है वो उसे रीड भी कर सकते हैं. सो इट्स नाउ वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी पॉपुलर ऑल्सो बिकॉज सो मैनी सेलिब्रिटीज़ हैव गिवन द इंटरव्यूज़. ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी है जिन्होंने इंटरव्यू दिए गए हैं एंड सो मैनी फ्रॉम आर देयर हु हैव इवन रिपीटेडली गिवन द इंटरव्यूज़. इसमें से ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने उसे रिपीटेडली भी दिया गया है. सो नाउ इट्स वेरी पॉपुलर. दिस इज़ द इंटरव्यू, इट्स वेरी पॉपुलर. So it's hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form, a source of truth, and in its practice and art. Others, usually celebrities who seem themselves
as its victims might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. Actually, it is also very surprising thing and noteworthy thing that the people who are about to give the interviews, they think about the facts, and they feel that so many details about their lives are going to be discovered, and they also think that so many things are going to be there in public because of interviews. ऐसे भी होता है कई बार कि सेलिब्रिटीज़ ऐसे सोचते हैं कि इंटरव्यूज लेने की वजह से उनकी लाइफ की जो रियलिस्टिक मैनर्स जो है, जो कोई भी फैक्ट्स होता है, वो पब्लिकली लोगों के सामने ऐसे आ जाता है. एंड द मेजर थिंग दैट शुड बी केयर्ड, दैट शुड बी very aware about the, it is about the journalist also, that the things should be related the fact only. There should not be any kind of fakeness or any kind of lie. यहाँ पे ऐसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू लेने के समय कि जो कोई भी डिटेल्स, जो कोई भी कंटेंट हमें मिल रहा है किसी भी पर्सन से, सेलिब्रिटीज़ वगैरह या कोई भी पब्लिक फिगर है उसके साइड से हमें जो कुछ भी कंटेंट मिल रहा है वो ट्रूथ होना चाहिए. इट शुड बी ऑन द बेस ऑफ फैक्ट एंड रियलिटी. इट शुड नॉट बी फेक. वो गलत नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ दिखावे का नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क और रादर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द फैक्ट शुड बी मेंटेन्ड और रादर द ट्रूथ शुड बी मेंटेन. जो सच है वो ऐसे मेंटेन होना चाहिए. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंटरव्यू वी कैन फाइंड. लेट्स प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स. Or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. Here the comparison has been made कि ऐसे बोला जाता है कि अगर कोई इंसान की आप ऐसे फोटोग्राफ ऐसे ले लेते हो, उसे पोर्ट्रे कर लेते हो, so it feels that you are going to take the soul of that person. So interview, it means that's a kind of document कि एक person ने कुछ भी बोला है और उसने, हमने ऐसे authorized करके उसे store कर लिया है, हमने उसे record कर लिया है. It can be published also, it can be telecasted also. So that's a kind of record. A person cannot deny for the same thing. जो इंसान होता है उसने जो कुछ भी बोला है, कुछ भी इन्फॉर्म करा है, उससे वो ऐसे डिनाई नहीं कर सकता. एंड द पर्सन हैज़ टू ऑबे ऑल द थिंग्स एंड द पर्सन हैज़ टू मेंटेन द थिंग्स. जो बोला है उसे प्रूव करे रखना, उसे मेंटेन करे रखना. दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ बिग डील दैट दिस थिंग शुड बी मेंटेन. लेट्स प्रोसीड फर्दर. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. Here you can underline this statement, this kind of horror of interviewer. A person can become this much afraid so that a person is not even ready any time to give any kind of interview. जब कोई इंसान इंटरव्यूअर से इतना डर जाता है, इंटरव्यूज देने से इतना डर जाता है, तो वो ऐसे किसी भी तरह का इंटरव्यू देने को रेडी नहीं होता है. सो हियर इट इज सेड अबाउट द सेम थिंग कि जो इंसान एक बार ऐसे हुआ कि इस इंसान ने इतना अफ्रेड हो गए, इतना डर गए कि वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे थे. इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife, Caroline, writes
in her diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral." See, here we can find the different attitude of a person. She is wife of Rudyard Kipling. Rudyard Kipling is very much well-known personality in English literature. He has written very great works. He has given enriched works in the history of English literature, and she is his wife, and she reported her husband as saying to the reporters. उसने अपने हस्बैंड को ऐसे बोला रिपोर्टर्स की और उसे मेंशन करते हुए, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it." Here it is said about the interview, the different mentality of a person to be interviewed. हर इंसान की मेंटेलिटी जो होती है अपनी वो डिफरेंट होती है. सो यहाँ पे इट इज़ द मेंटेलिटी ऑफ द वाइफ ऑफ रुडयार्ड कीपलिंग. उनकी वाइफ की जो मेंटेलिटी है उनकी बात यहाँ पे की गई हुई है. वो ऐसे पूछती है कि मुझे ऐसे क्यों इंटरव्यूड होने से मना करना चाहिए, कि बिकॉज इट इज़ द काइंड ऑफ क्राइम यहाँ पे पूरे क्राइम के सेंस में नहीं बोला गया है, यहाँ पे एक टॉन के सेंस में, एक सटायर के सेंस में यहाँ पे बोला गया है. सो बिकॉज पीपल वर अफ्रेड कि वो एक सारा रिकॉर्ड होता है, इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी द काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग, द काइंड ऑफ प्रूफ, द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. नाउ शी वॉन्ट बी एबल टू चेंज द वर्ड्स, नाउ शी वॉन्ट बी एबल टू डिनाई फ्रॉम द वर्ड्स. सो इट्स द काइंड ऑफ, इन दैट सेंस इट्स द काइंड ऑफ क्राइम ऑन द पर्सन, कि जो लोग होते हैं उसके ऊपर एक तरह का क्राइम होता है. एंड अ पर्सन इज नॉट लाइकिंग इट्स नॉट लाइकिंग टू बाउंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ. जो कोई भी इंसान होता है उसे अपने आप को ऐसे बाउंड करने के लिए वो रेडी नहीं होता है. सो इन दैट सेंस इट इज़ द काइंड ऑफ इमोरल थिंग. सो इज इट प्रॉपर और इज इट वैल्यूएबल और इज इट इवन वैलिड, इज इट इवन जेन्युइन नॉट टू बी इंटरव्यूड, कि क्या ये सही होगा कि अपने आप को इंटरव्यू ना होने दे. बिकॉज दैट इज ऑल्सो इवन पॉसिबिलिटी कि बिकॉज ऑफ हर इंटरव्यू सो मैनी पीपल कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. द पीपल कैन नो अबाउट द रूल्स एंड द थिंग्स, the success behind the success of her life. So इट इज़ वेरी गुड थिंग टू बी इंटरव्यूड. अगर वो अपने आप को इंटरव्यू ऐसे लेना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लोगों को पता चलेगा कि उनके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, उनकी लाइफ के बारे में उसने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की है. सो वो लोग तक पहुँचेगी एंड द पीपल कैन बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो हियर इट्स गुड एंड शी हैज़ सम डिफरेंट मैंटालिटी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल. उसकी मैंटेलिटी जो है वो बाकी सब लोगों से काफ़ी अलग है. एंड दैट्स वाई इट इज सेड दैट एक्चुअली लेस पीपल आर देयर हु आर रेडी टू गिव द इंटरव्यूज़. ऐसे बहुत ही कम लोग हैं कि जो इंटरव्यूज़ देने के लिए रेडी हो जाते हैं. येट कीपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain. Mark Twain, that is also the name of artist. Only a few years before H.G. Wells, यहाँ पे जो सारे भी नाम आ रहे हैं, this all the people are related to the literature के साथ इन लोगों का connection है. So here the names are mentioned, writers and artists. H.G. Wells also. H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interview, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin Solbello, who has consented to be interviewed on several occasions. Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. See, this statement is very much important, that once you are going to give any kind of interview, once you even gave the interview, it's the kind of thumb mark on the windpipe. Means
you cannot deny for this word. Suppose in interview mention something, okay, that was there in your life, okay, you did something like that in your life, you cannot deny any time. It's the kind of थंब मार्क इट इज सेड कि अगर आप इंटरव्यू में कुछ भी ऐसी बात बोलते हो, कुछ भी ऐसे जो कुछ भी आप कहते हो कि आपने लाइफ में कभी ऐसा किया है या फिर लाइफ में कभी कुछ ऐसे था, सो आगे कभी भी आप उस बात पे मुखर नहीं सकते, आप कभी भी उस बात को डिनाई नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये एक तरह का थंब मार्क है किसी भी पर्सन के लिए जो कि इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए, कि वो पर्सन उस बात से डिनाई नहीं कर सकता. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई एक्चुअली पीपल आर अफ्रेड फॉर गिविंग इंटरव्यूज़. इसलिए लोगों को ऐसे डर लगता है इंटरव्यूज़ देने के लिए. Yet despite the drawbacks of the interviews का जो वीक पॉइंट है उसकी वजह से, और फिर भी it is a supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis' brain has written almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. Here the actually first part of this unit, the interview ends up here in last. It is said that though actually there are so many drawbacks even of interviews, ऐसा है कि बहुत सारे drawbacks भी है यहाँ पे, बहुत सारे weak points भी है interviews के, but फिर भी it would be grateful for any person, for any people to give the kind of interview. किसी भी लोग के लिए, कोई भी लोगों के लिए इंटरव्यू देना एक बहुत ही अच्छी बात होगी. एंड एक्चुअली नाउ डेज इट हैज़ बिन वेरी कॉमन ऑल्सो, वो बहुत ही कॉमन बन चुका है अब के टाइम में. सो इट्स वेरी सिंपल दैट वन पर्सन आस्क समथिंग एंड द अनदर वन रिप्लाइज इन सम वे. ऐसे होता है कि एक पर्सन जो होता है वो कुछ पूछता है एंड द अनदर पर्सन जो होता है वो कुछ रिप्लाई करता है. सो इन दिस सेंस एक्चुअली दिस यूनिट द इंटरव्यू इट हैज़ बिन डिस्क्राइब हियर. इस सेंस में से ऐसे डिस्क्राइब किया गया है दैट वन पर्सन आस्क समथिंग एंड द अनदर पर्सन रिप्लाइज समथिंग. ओके, सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, the first part is about interview, how it's been taken, the impression of interview on the mind of the people, the reaction of the celebrities towards the interviews. So ये सब बातें जो है वो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस की है कि लोगों का ऐसे कैसे रिएक्शन है और सेलिब्रिटीज़ का कैसा रिस्पॉन्ड है, वो सभी बातें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की. दैट इज़ अबाउट इंटरव्यू. ओके, नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस actual interview. It will be the kind of specimen of interview, students. Okay, so I hope students that you could understand these things. Suppose you have any difficulty, any doubt, you are free to ask me anytime. Okay students, so take care of your health. Thank you, have a nice day. And yeah, your today's homework is that you have to write these questions that you have inside your textbook. Think as you read, because you have to think as you read and as you understand. Okay, so this is your today's homework. So suppose you find any difficulty, you are free to ask me. So thank you, have a nice day.